Hopefully you guys be doing great. There is a slight difference between the types of the pronouns and the types of the adjective. We have already uploaded a video about the types of the pronoun. You can check that out in our playlist. So in today's lecture, we'll be talking about the types and the definition of the adjective. Adjectives are the word that describes nouns or pronouns. ये वो अल्फाज होते हैं जो हमारे पास की सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हुए वो या किसी क्वालिटी को या फिर किसी क्वांटिटी को मेंशन करते हैं। ऑलरेडी टाइप्स में हम पढ़ लेंगे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। ऑल दोज एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। वो एडजेक्टिव्स जो कि हमारे पास किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन की किसी क्वालिटी को, a quality can be positive and can be negative. For example, this is a red. So red is a quality of that shirt. This is a green shirt. He's a good boy. That is a bad person. क्वालिटी किसी नाउन या प्रोनाउन की पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती हैं। So demonstrative adjectives are all those type of the adjectives they point out nouns or pronouns refer to it. किसी नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दूज, सच। These are some of the common examples of the demonstrative adjectives. ये ऑलरेडी हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में भी पढ़े थे। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव एंड न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब्स द क्वालिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग। ये हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में या उसके अमाउंट के बारे में बताता है कि वो कितनी मकदार में है। फॉर एग्जाम्पल्स में देख ले, फ्यू, मैनी, सेवरल, ऑल, सम। दीज आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। इसके साथ साथ अगर हम न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करें तो न्यूमरल एडजेक्टिव में बाकायदा नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 कप्स। तो 2 हमारे पास क्या है? एक क्वांटिटी है जो उसके प्रोनाउन के साथ होने वाले किसी चीज़ के मकदार को पॉइंट आउट करता है, इसीलिए वो हमारे पास न्यूमरल होते हैं क्योंकि उसमें बाकायदा उसका नंबर मालूम होता है। इसमें चूंकि नंबर मालूम नहीं होते इसलिए हम इसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। So the interrogative adjectives are all those types of the adjectives that used to ask questions about nouns. किसी भी नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछने वाले एडजेक्टिव्स को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि whose book is this, who, when, why, where. These are some of the common examples of the interrogative adjectives. Moving towards the next one, which is also an important one, possessive adjective. So possessive adjective shows the ownership of a noun or a pronoun. किसी नाउन या प्रोनाउन के किसी चीज़ की ओनरशिप को इंडिकेट करने के लिए, जाहिर करने के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई बुक, हिज कार, हर नोटबुक, इट्स टाइमिंग, आवर्स, theirs, yours. These are some of the common examples of the possessive adjectives. Moving toward the last one, which is also an important one, indefinite adjectives. देखिए, इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें किसी चीज़ के अनस्पेसिफिक रेफरेंस के बारे में बताएं, कि जिस चीज़ के बारे में एग्जैक्टली हमें मालूम ना हो। तो ये भी मोर लेस क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स की तरह होते हैं, जैसे कि समवन, समथिंग, नो वन, एनीवन, एनीबॉडी, एनी, समवन, no one. These are some of the common examples of the indefinite adjectives. Hopefully you got it. If you still have any kind of confusion relating to this topic, you can ask me in the comment section and I'll be glad to help you. If you wish to get a high score, follow us for more.